Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed electrochemical series and how this electrochemical series work. And by seeing and by watching and with the help of this chemical series we can determine any reaction. Correct. Now again we'll discuss the electrochemical series and the standard electrode potential which is considered here is hydrogen, which is 0.00 volt. Okay, let's start with the electrochemical series. Oxidizing agent and lithium metal is the greatest, the strongest and weakest oxidizing and reducing agent here. Most powerful reducing agent in an aqueous solution. You can also see from the Note the point. Strongest reducing agent according to electrochemical series is lithium. Okay, बिल्कुल इसका रिवर्स करेंगे तो उधर एकदम टॉप पे कौन हो जाएगा? फ्लोरीन. वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो एजेंट है वो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज. वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत अच्छे से देखेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट है. That as the value of the standard potential increases from the bottom to the top of the table, Note the reactions show a great. Note the table. You can make this table and you can predict which of the reaction is feasible and which of the reaction is not feasible. Feasible means कोई reaction ऐसी हो जो process हो सकती हो, कुछ reaction ऐसी हो जो react हो ही ना. Correct? जैसे हम कहें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट मिलाया जाए या जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलाया जाए तो कौन सी रिएक्शन होगी, आपको ये बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखकर. करेक्ट. तो ये जो सीरीज हमने बनाई है, करेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गिवन है, याद रखेंगे. इसका जस्ट उल्टा रिवर्स होता है आईएससी की बुक्स में. तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर लिथियम से शुरुआत करते हैं, ऊपर शुरुआत करते हैं. यहाँ पे कहाँ से लिया है? यहाँ पर फ्लोरीन से लिया है. तो फ्लोरीन देन कोबाल्ट प्रॉपर्ली दिख रहा है. तो आपको ये एग्जैक्टली यही सीरीज आपको कहाँ मिल जाएगी? एनसीईआरटी बुक में. तो इसे आप यहाँ से पूरी सीरीज पहले देखोगे, ठीक है, और एक सीरीज मैं आपको दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसको अच्छे से याद करना है आपको. The tendency to undergo reduction. Note the point. The strongest oxidizing agent are found at the top, while the strongest reducing agents are found at the bottom of the table. As the value of standard potential decreases, half reactions have a greater tendency to oxidize. The reactions in the table need to be flipped to write out the oxidation half reaction. And the sign for the electrode potential changes. That is, the standard oxidation potential is equal to minus standard reduction potential. Try to answer. कारण ने पॉइंट बताया था ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट किया था. जो भी हम सेल बनाते थे उसमें क्या किया था? लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट में क्या था? ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड था. और राइट हैंड साइड में क्या था? वो कैथोड था, यानी कि वहाँ पे क्या था? रिडक्शन था. राइट. और हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल से यानी कि ईएमएफ लिखते हैं तो ईएमएफ क्या लिखा था? ई कैथोड माइनस ई लेफ्ट, यानी कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन. यानी कि आपको अगर वैल्यूज गिवन हो तो आप बता सकते हो कि रिएक्शन कैसे होने वाली है. तो आप क्या बताओगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अंडरस्टूड? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से नोट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. This question on your own before checking the answer. Which of these is the strongest oxidizing agent? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को वापस देखें और जरा यहाँ पे क्वेश्चन करें, आंसर बताएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखकर बताएं, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है. The nitrate ion, elemental iodine, or the dichromate ion? Answer: the dichromate ion is the best oxidizing agent. अंडरस्टूड है. As shown in the table, it has the most positive reduction potential. करेक्ट. जिनकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, आप देखोगे टेबल पे अप साइड, जो भी अपर, जो भी जितने भी सीक्वेंस में ऊपर साइड हैं, हाइड्रोजन के ऊपर देखेंगे हाइड्रोजन 0.00 है, तो उसके ऊपर कहाँ जा रहा है? प्लस वाले. हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या है? माइनस में वैल्यूज हैं. राइट. तो जितना ज्यादा प्लस साइन आएगा किसमें? ईएमएफ का,
तो क्या आएगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। जितना माइनस साइन आएगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू माइनस में होगी उसको क्या बोलेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो वैसे भी Cr2O7 क्या है, वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बात करेंगे अभी चल के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात करेंगे। K2Cr2O7, इसको बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। राइट। तो डाइक्रोमेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KMnO4 भी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे डाइक्रोमेट होता है। देखें, Sometimes inert electrodes such as platinum, gold, or graphite rods are used in Voltaic cells. Inert electrodes provide a surface for electron transfer to occur, but they don't participate in the reaction. If inert electrodes are used, then the electrodes do not change in size as the spontaneous reaction proceeds. The potential difference between the two electrodes gives the cell potential. For Voltaic cells, the cell potential is always positive. To calculate the EMF of the cell, add the potential for the cathode half reaction and the potential for the anode half reaction. The electrode with the positive reduction potential acts as the cathode, while the electrode with a note the points. E cell is equal to E cathode plus E oxidation, या आप इसको कह सकते हो E cell equal to E right plus E left. Understood? negative reduction potential acts as the anode with respect to the standard hydrogen electrode. ये स्टैंडर्ड सेल है। सॉल्ट ब्रिज आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली। We develop our skills by completing a practice problem. Consider this situation. A student constructs a Voltaic cell by connecting a half cell containing silver wire immersed in 1 m silver nitrate and a half cell made from aluminium wire immersed in 1 m aluminium nitrate. Here M stands for molar. Okay. Student है, a student constructs a Voltaic cell by connecting a half cell containing silver wire immersed in 1 molar silver nitrate. यानी हमने एक बीकर में क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन और सिल्वर वायर ले रखा है। ओके। और एंड हाफ सेल, एक हाफ सेल समझ गए, लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, दोनों दोनों हाफ सेल हैं। ठीक है। एंड हाफ सेल मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम एक बनाया, एक हमने एल्यूमिनियम रखा है और नीचे क्या रखा है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। यानी जो भी मेटल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी जो वायर हमने ले रखा है, ये दोनों क्या है, एक तरह के वायर हैं। हमने इसको इमर्स कर मान लो ये एल्यूमिनियम का है, इधर वाला सिल्वर का है, तो सिल्वर नाइट्रेट को समझ गए ना, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में रखा सिल्वर वायर को, और एल्यूमिनियम को रखा एल्यूमिनियम के ही नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ में। तो हमने 1 मोलर करके कंसेप्ट बना रखा है। ओके। अब देखें आगे। Identify the anode and the cathode in the cell. बहुत इंटरेस्टिंग है। Write the balanced net ionic equation that occurs. Calculate the EMF of the cell. Identify the direction of electron flow in the circuit. Note the point. Identify the direction of ion movement through the salt bridge. Which electrode will get larger? Which electrode will get smaller? There's a lot to do here. So we'll work through the problem one piece at a time. Let's start by consulting our table of standard reduction potentials. The silver half reaction has a higher standard reduction potential than the aluminium half reaction. This means that silver has a greater tendency to undergo reduction than aluminium. समझ गए ना, जो ज़्यादा रिडक्शन दिखा रहा होगा, करेक्ट, सिल्वर हैज़ द हायर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। हायर मतलब वो पॉजिटिव में साइन आ रहा है, करेक्ट। और एल्यूमिनियम का क्या है, उसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। तो जिनका स्टैंडर्ड हायर होगा पोटेंशियल का, तो क्या रखें, देखो वो पॉजिटिव ले लिया है, करेक्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं वो सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि कौन सा कैथोड में रखेंगे, कौन सा एनोड में रखेंगे।
Since silver has the higher standard potential, silver will undergo reduction. Aluminium has a greater tendency. याद रखेंगे, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है वो कहाँ रखेंगे, रिडक्शन, यानी रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड में रखेंगे। एक बात तो क्लियर हो गई है ना, क्योंकि हमें किसके कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है, ये देखो, सिल्वर का और एल्यूमिनियम का नीचे। तो आपको वैल्यूज देखो कितनी दिख रही है यहाँ पर, बहुत अच्छे से देखो। एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू क्या दिख रही है नीचे, प्रॉपर्ली देखें कितना है, -1.66। एल्यूमिनियम, सिल्वर के लिए कितना दिख रहा है, +0.80। करेक्ट। अब देखें, To oxidize, so we will need to write an oxidation half reaction for aluminium. Since reduction occurs at the cathode, silver will be the cathode in this voltaic cell. अंडरस्टूड हुआ। Aluminium must be the anode, since oxidation occurs at the anode. समझ गए ना। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है, अगर वैल्यू प्लस में आ रही है, समझ गया ना, अगर वैल्यू प्लस में आ रही है या फिर वैल्यू प्लस में है तो ज़्यादा वैल्यू है, या दोनों वैल्यू प्लस में है, तो उसमें अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको कहाँ रखेंगे, कैथोड की तरफ, यानी रिडक्शन की तरफ। और जो वैल्यू कम होगी तो कहाँ रखेंगे उसको, नेगेटिव साइन, यानी कि वो कहाँ हो जाएगा, माइनस की तरफ, यानी कि वो कौन होगा, एनोड की तरफ। एनोड किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। Now that we've identified the anode and the cathode, writing the half reactions is easy. एक बात तो क्लियर हो गई, आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल से हमने बनाया था, उसमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होता है, आपने कहा था एनोड से कैथोड की तरफ होगा कि नहीं होगा। याद रखेंगे, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ये पॉइंट है, इसको अच्छे समझेंगे आप। देखें, The cathode, a silver ion gains one electron to form silver metal. The value for the standard reduction is plus 0.80 volts. At the anode, aluminium metal loses 3 electrons to form an aluminium ion. Compared to the standard reduction potential table, we have flipped the reaction. Notice also that the sign of the electrode potential changes as well when we write the oxidation half reaction. noted. We need to balance these half reactions to show the conservation of change as well as mass. Noted. To do this, we must make sure that the number of electrons lost equal the number of electrons gained. In this problem, we need to multiply the cathode half reaction by 3. However, reduction potentials are intensive properties. Note that the value of E0 for the reduction half reaction is unaffected. Now, we are ready to find the overall balanced equation and calculate the cell potential. Adding up the two half reactions gives the net equation. 3 moles silver ions react with a mole of aluminium metal to form a mole of aluminium ions and 3 moles of silver metal. To calculate the cell potential, just add the cathode and anode potentials. We get E cell is equal to plus 2.46 volt. Now we can find E0 cell. We have enough information now to draw a diagram of our voltaic cell. Electrons will flow through the external wire from the aluminium strip, the anode, to the cathode, silver. Understood? Eh? When the switch is closed, anions will flow from the salt bridge into the anode compartment, and cations will flow into the cathode compartment. As the cell runs, the aluminium electrode will get smaller, and the aluminium ion concentration will increase in the anode compartment. अंडरस्टूड है।
आपने कहा जिस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो सीधी सी बात है, जो मेटल है उसका जो साइज होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब साइज कम हो जाएगा तो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इसी मेटल के आयन क्या होगा, इंक्रीज हो गए। जो अभी तक सॉलिड फॉर्म में थे, जो मेटेलिक फॉर्म में थे, वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। क्योंकि वो क्या बन गए भाई, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर कितने लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो क्या बन गया, आयन में कन्वर्ट हो गया, 3+ आयन में, राइट। इसे बहुत अच्छे से लिखेंगे। The silver electrode will get larger while the silver ion concentration in the cathode compartment will decrease. देख रहे हो आप, राइट हैंड साइड में क्या हो, सिल्वर Consider a Voltaic cell, such as the Daniel cell we studied earlier. If an external opposite potential that is less than the cell potential is applied, the reaction will continue in the forward direction. Note the point. If instead an external opposite potential is applied that is equal to the cell potential, the reaction stops altogether. Note the points. 3 points are here. There will be no current flow. Next. If the external opposite potential is larger than the cell potential, the cell will now run as an electrolytic cell. 3 points have to be remembered. The reverse reaction will occur. Electrochemical cells have a variety of uses.